हेलो, हाँ बोलिए ना। हाँ बोलिए। हाँ हाँ, नहीं जा पाए, शादी में थोड़ा व्यस्त है ना, इसीलिए। ठीक है, तो देखेंगे क्या है, कर लेना। अभी रुक जाइए, अभी नहीं बोलिए। Hello, you say some, but I cannot hear. Hello. Yes. Thank you.
Hello, Father. Hello. Okay, can you hear us or no? Voice is audible? Because of rain. Yeah. Anyway, let's see. Yeah, let's see. Yeah. Hello, sir. Okay, bye. जयंता जी नमस्कार. नमस्कार जाकिर भाई. Hello, good afternoon. Good afternoon, Father. Good afternoon. Yes. Hello, Father. Hello, good afternoon. Acha. We cannot see everybody. How are you? Yeah, fine. Your name, please. नहीं हम लोग बाहर जयंत कुमार नेम प्लीज बोल रहे हैं. हो सकता है कि आएंगे, आधो घंटा लग सकता है, 15 मिनट लग सकता है या 1 घंटा लग सकता है. It is 3 o'clock. We'll wait for. Sure. Sister, just will wait another 1 or 2 minutes. Yeah. टू भी करे जयंता करे यहाँ पर करते. Hi Jayanta ji. Hello. How are you? I'm good. Thank you. How are you?
I am good. I am okay. Our staff is okay. Thank Okay. you. Thank you. Nice to meet you. Thank you. So good afternoon, everybody. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Jayant. Good afternoon, Father. Sister Ruby. Good afternoon, Sister Ruby. Good afternoon. नमस्ते जनता जी. Namaste. Good afternoon, sir. Jayanta, sir. Good afternoon. Jayanta ji, good afternoon, sister. Good afternoon, sister. Good afternoon. Everybody, good afternoon, everybody. Good afternoon. Namaste. Hello. Yes, Suresh. Yes, sir. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, everybody. Yes, good afternoon. Good afternoon. नमस्ते जयंता जी. Namaste. कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? जी अच्छे हैं हम सब. साथी जुड़ रहे हैं धीरे धीरे. हाँ. Just another 1 minute or so, then we'll start. Namaste. Namaste. बढ़िया. Good afternoon, sister. Good afternoon. Good afternoon, sister. Manthan Good se. afternoon. नमस्ते सबों को. Namaste. नमस्ते. जय भीम. जय भीम सभी आदमी को. Jai Bhim. जय भीम. रूबी जी नमस्ते. नमस्ते. कैसे हैं आप? ठीक है. Sister, good evening. Good evening. How are you? Fine. Okay, thank you. Good afternoon, sir. My name is Minu. Welcome, Minu ji. Thank you, sir. So, Father, should we start now? We have 75. Yeah, we begin. Okay. Sister, welcome, Minu ji. Sister. Sorry. Just It was mute. Just mute all, then you start. Yeah. So, friends, all good afternoon. We begin this Zoom meeting. So, on behalf of the national team, I welcome today's resource person, Mr. Sukant Chandraji. You are with us. Welcome to this Zoom meeting. And
Our partners have joined through Zoom link and also through YouTube links. So many will be listening to you. So welcome, Sukantaji. We welcome our guest, Mr. Guru Prasad. He's here. Welcome to Mr. Guru Prasad. Thank you. And Mr. Guru Prasad is the director of UDUCO, a Spanish-based organization. So we welcome, sir. And we are sorry to tell you that Teresa from Albon, the funding agency of JV Network, could not join because of her some urgent work. It could have been nice. She could have been here, but unfortunately, because of her urgent work, she could not join. And I welcome all our partners, our field staff. They are eager to listen to Mr. Sukanta and our guest. So all our partners are from 15 states, from South, North, East, West. So maybe the language issue will be there, but I hope all will be benefited from your talk, sir. So I welcome all my friends here, those who have joined. So dear friends, the topic of today's meeting is social audit of social protection schemes, the concepts, steps, and strategies. As we are aware that through Lokmanch, we are helping our community members to get the benefits from social protection schemes, such as old age pension, widow pension, Bima Yojana, insurance, etc. So, and there is one activity in the second year also, code number D4. D4, conducting entitlement access audit. So I hope this talk of our resource person will help us to have the better understanding on the topic and will be helpful for us to carry this activity. So we will listen to our guest and also the resource person in this meeting, and we will have some times for the clarification suggestions after the talk from the resource person. So this Zoom meeting may go up to 4:30. So I may request all our partners to keep yourself the audio mute so that it will be helpful to listen to our resource person in better way. So before we proceed, I welcome Father Stanley for the opening remarks. Father Stanley, you are welcome. Thank you, Sister Ruby. Am I audible? Yes, yes, sir. Yes, Father. Thank you, Sister Ruby, for this welcome setting. And thank you, dear friends, for joining and welcome. This is a very important training consultation because we do realize that this is the second objective and we are in the second year of the third phase of our ESP project. Actually, it could have been much earlier, but due to various reasons, we could not have it. But at the same time, there were some difficulties that we are facing in terms of understanding. Like initially, we were talking of social audit and social audit, but actually it was the entitlement audit. So even today, it's not very specific social audit of social security as such, but the entitlement audit. And before that, understanding of the social security, in which India is also a signatory along in the International Labor Organization. So ILO, in that India is a partner and signatory also. So with that purpose, we have convened this online meeting to have better understanding of social security, how to go about doing entitlement audit, what are the procedures, what are the strategies that we can have in our own context, because context is very important. We know we are from diverse contexts and situations throughout India. Therefore, implementing it in our own context is crucial. Therefore, understanding the concept with better clarity. At the same time, we cannot have uniform strategy
and also the processes because of the diversity, be it social, cultural, be it state understanding of the government, understanding its approach and the processes. All these are important, and I'm sure our guest speaker or resource person today, whom Jayanta would introduce, I welcome him very specially today. And it would have been our pleasure to listen to Teresa also, as Sister Ruby mentioned that she is not able to join us due to some urgent reasons, but in between she might also join. So that's our hope. So again, I repeat that this is for better clarity of the concept and how to go about doing entitlement audit of social security. And at the end of the third year, actually the hope is that this becomes a part of government's, what do we call, manifesto, be it different parties, or that's what we are expected to begin the process right from our local context going to the state and the national level, so that it becomes the part of manifesto of different parties, including, of course, I mean, the governing party, and also. So it is the process of advocacy. It's a process of advocacy starting from the local context, going to the different regional level, and then going to the state level and then national level. So this is the whole purpose of today's our consultation and training. And I'm happy to have our resource person here who has a more experience than us. He will help us to understand. So may I request Jayanta to moderate the session and also introduce our speaker today. And as far as the language is concerned, we would try to make it practical in terms of our understanding. We'll see how we can do about it. Okay, so over to Jayanta. Thank you. Thank you so much. Good afternoon to all of you. Thank you, Father Stani, for your opening remarks. As you said, now the Lokman is currently present in, of course, I can hear the echoes. So sorry for these disturbances. Okay, so as you said, we have been Lokman's presence in 15 states, and we are working with very much grassroots organizations, especially how the marginalized people will access the rights and entitlement under the social protection floor. This is how the project that we have been organized urgent. So before going to introduce the guest speaker today, we have Mr. Guru Prasad Rao. Guru Prasad Rao is the country director for EDUCO, and he has been into the development sector since last 20 years. He is very good in terms of participatory organizational development, project planning, monitoring, and also advocacy in the national and international level. So thank you so much for the taking out your time and being with us. We will come to you, Guru Prasad sir. In the same way also, I would like to welcome Mr. Bharat Nayak. He is the country manager of EDUCO. Again, he is having different backgrounds, and also he is very good expert in child education, child right, and also this protection. So I welcome both Guru sir and Bharat. In fact, he is my friend. Welcome, Bharat ji. Before going to Shukant bhai, I will introduce him later on. So we'll listen from the Mr. Guru Prasad sir. Over to you, sir. Hello, am I audible? Thank you, Mr. Jayant, and thank you, Father, and thank you, Sister, for hosting this wonderful conference workshop, which is quite timely needed. And I congratulate Lokman for taking the issue of social audit and entitlement audit, which we've been talking about today. At EDUCO, we feel our belief statement is education heals. Any problem in the society,
the awareness is a solution, 50% solution to the problems. So this session, I believe that it is going to educate all the documents partners, community leaders about social audit. I think you've already done a process to begin, and today you're talking about entitlement audit. Probably this is going to be empowering all the team members to mainly promote three things within the communities. One is accountability. Accountability comes with responsibility. And when accountability and responsibility is practiced, the good governance is promoted in any organizations, in any communities. So I feel today's session, Mr. Sukant is going to host it, and I'm also a kind of student and participant to the session to learn more about this. And thanks, Jan, and thanks, Lokman, for giving me an opportunity to speak to his stewards. But I strongly feel this definitely such initiatives. Basically, we had chapters as MSWs when we were studying MSWs. Post that, when we practice development work, somewhere these concepts are missing. We don't really get to practice. But it's very important to practice keeping the larger development perspective and the rights perspective, which is a very big issue today. So thanks, Lokman and team, and practically thinking about such needs today. And I am also a participant. I hope that I get to learn a few things today, new things. Thank you, Jan, for inviting us for this. And thank you, Lokman's team, and best of luck for this processes. Thanks a lot. Thank you. Thank you so much, sir. Your encouraging word itself will take us to not only in the national level, but also to the very much grassroots level, because you are very much connected with your statement that education is required. So basically this session will give some kind of education, how to go for the social audit and all. We'll listen from Sukant Bhai from his technical session. So I would request Bharat just to say few words, then we'll go for that technical session. Bharat ji. Good afternoon. Thank you, Jayanta, and thank you, entire team of the Lokmanch. And I think I am also the similar learner, like Guru mentioned earlier, that because this topic is quite unique for me also, because I have been working on the education sector for more than 20 years. So I think all the best for the all participant, and thank you so much for giving this opportunity to express. Yeah, thanks. Yeah. Thank you so much, Bharatji. Thank you so much, for your encouraging word. Okay, so there is still some echoes, technical problems. So okay, so now I will request to Mr. Sukant Behera. Sukant Behera is the project specialist lead. Now also he is having some thematic expert on the social protection and social audit. And he has been in the development sector since long time. And especially he is very, very good in terms of auditing this social protection schemes. During his tenure, he was working with Railway Children in India and also NAGDOR. During that time, he conducted a lot of social audit tools, and also he has developed this tool. And in terms of education, he did his master in poverty studies and policy analysis from ISS Netherlands with the 4 foundation fellowships. And he is the man actually who connects from the grassroots to the national, international level, and lobby advocacy, including the child safeguarding and also rights and education, poverty, all those kind of things. So without further delays, I would request Sukant Bhai to take this session. So welcome, Sukant Bhai. Now the floor is yours. Yeah. Thank you, Jayanta, and thank you, Sister Ruby and Father Stani and Guru Prasad ji and Bharat ji. So, Jayanta, I have a PowerPoint presentation. So, yes. Sir, you are the co-host, so, so you can share the screen. Okay. Just a minute. Are you able to see my screen, Jayanta? Not yet. No, it's not so.
1 minute. Hello. Hello. Hi, yes, sir. Yeah, just a minute. I'm just sitting. Okay. Just a minute. I'm not able to. Ah. That is, I think, big screen, full screen, I think. Just a minute. What is it? It's 0208. So, sister, are you able to see the screen? Hello. Yes, sir, it's visible. It's visible. Yes, Okay. it is visible, sir. Yes, actually, sorry for the technical problem. Actually, I'm not used to Zoom. You are into that Microsoft Teams and all those things. So we very rarely use this It's software. okay, sir. It's okay. Yeah. Yeah. Okay, so we'll start. Actually, social audit and entitlement audits. So today the topic is a social audit of social protection scheme and entitlement concept, steps, and strategies. So before I get into the definition part of the social audit, I would like to highlight some of the things. This is a social audit, not a very new concept actually. This concept is very old, actually old in terms of when even in the ancient time, we used to have the concept called social audit, and the king and the emperor used to appoint a person from time to time to take feedback on their policies and programs and their and on the behavior of their employees from time to time. And this person, the appointed person by the king, used to visit to the public place and take the feedback from the public in terms of to to take genuine feedback, particularly on different programs, schemes, taxation laws that were there at that times. And this social audit in India particularly become more prominent and taken a different shape
after the 73rd and 74th Constitution Amendment Act, which is related to Panchayat Raj, 1992. It has taken a different steps actually. Since then, we have talked about conducting social audit of the social protection schemes actually, because this amendment has had given special power to Gram Sabha in terms of reviewing, evaluating the performance of different social protection scheme, which is funded either by the state government or the central government and government. And and it is the since then it has taken the popularity among the different states and the nations. Okay, so so this is the just a context, and social audit, if you go by definition actually, definition in social audit, as I told you, it is all about ensuring accountability. Accountability in a very systematic way, where people and the community ask the government on their performance and on their contributions and on their contributions in terms of implementing a particular program or a scheme for the welfare of a particular community. So this is called social audit. Actually, it is actually, this is the definition. Social audit is a democratic process by ensuring public accountability through a systemic demand of information by the community in response to the work that has already been implemented by the implementing agency. It means it is already always done once a scheme is being implemented, and to look at whether the scheme actually has benefited the intended beneficiaries or not, how it has benefited, and what has been the contributions of the respective officials who have designed the program schemes, who have implemented the schemes, and so look at all those aspects of a particular schemes of a particular implemented programs. This social audit is being done. Next is, what is social audit? Actually, social audit, if you look at it, is a very it's a community kind of process actually, a community and people driven process, and it is a process which is all led by the people actually. People are the key and the center of the entire process. It is not like if you look at you must have heard about financial audit and social audit. It is in a financial audit, when financial audit is done, actually we done to look at to check the accuracy of a particular utilization or a spending. And for financial audit, we have a dedicated auditor, expert who has having expertise in finance and accounting. So the auditor has to be recognized by the government. All those criteria are required. But as far as social audit is concerned, it is very, very different. Actually, in social audit, people are the auditors. People lead the entire process. They define how the audit has to be conducted, and how it has to be carried forward, and how it has to be concluded. The entire process is being led by the people. That's why it is called people-led or community-led process. And it also gives the people the opportunity to explore an initiative and ask questions to those who are involved in design and implementation of a program. It means it also provides an opportunity to the people actually, particularly the people means the beneficiaries, to ask actually what has been done, or why, if something has gone wrong, why has it gone wrong, so what is the reason. So they sit together, discuss, and find out a solution for this. Okay.
And it also it aims at to involve all the stakeholders in the processes to measure social performance in order to achieve improvement as well as report accurately what has been done, what I already said. Next is so social audit. One of the critical element of social audit, actually, it always also look at the impact of the governance, particularly in terms of the its impact on the vulnerable or the most marginalized people in our society. Whether actually, as you know, there are when you talk about social protection scheme, so there are certain protection schemes, there are certain schemes are all for all the communities, but there are certain protection schemes which is only for particularly communities, for particularly vulnerable community, whether it is for children or for women. So like this. So when social audit is being conducted, one of the important aspect of the social audit committee is to look at whether this the envisaged goal of this particular scheme has been delivered or not to this particular community or not. That has to be seen to the entire process of the audit process. Okay, so there are certain guiding principle, actually, where we have to guiding principles for conducting social audit. So these are the only theoretical aspect of the concept, actually, because it is very important to understand the concept. Once you understand the concept and understand the rationale behind why this why it is to be done and what are the different element and principle of audit, then the next phase of audit becomes very easy. So the first guiding principles is it is multi-perspective. That means it should reflect the view of all the stakeholder. That means actually audit, when we talk about audit is actually particularly done in our context, Indian context and social protection scheme context. It is done at the panchayat level and local governance levels. So therefore, and in a panchayat, we'll find different set of peoples, different different community. It is not audible. Sir, kindly unmute. Sukantji, kindly unmute. Sorry, by mistake. Oh. Okay, sorry. Hello, can you hear me? Yes. Okay, thank you. Sorry. So I was talking about the principles of social audit. I was telling, actually, when audit is being conducted, actually it is conducted in a gram panchayat or in a village setup, actually, to understand the benefit of a particular program or a particular schemes. So in that context, so it is very important to adhere certain principles, guiding principles. The first principle is it should be multi-perspective. That means in a village setup, actually, if in Indian context, it is cohabitated by different caste, religion, community. So you have to make sure in the entire audit process, a inclusive view, a multi-perspective is being reflected in the entire process. So this is the first principle. Second principle, it has to be comprehensive. It should embrace all aspects of community benefits and performance along with that that organization. It means when social audit is being conducted, it should look into what kind of benefit has been provided to a particular scheme to a particular community.
So you have to look into each and everything in the entire process. Okay, and it has to be also regular. That means social audit, it should not be आप एक बार करके उसको छोड़ दिए, but it has to be done in a very regular basis, on a periodical interval, to make sure accountability and responsiveness among the duty bearers. So it is very, very important. And it also, the fourth principle is disclosure. Disclosure means the finding of the social audit has to be made available to all the stakeholders and to the wider community. And actually, one of the beauty of the social audit is that it is done in a very transparent and very open manner, so that everybody is aware of, everybody are able to participate and share their views during the entire process. And once the finding and analysis is being done, the analysis has to be shared to the entire stakeholder, to the entire communities, through a public hearing, जिसको हम बोलते हैं जन सुनवाई करके, उसको आपको हम लोग उसको शेयर करना चाहिए. Okay, and the fifth principle is the comparative. Information generated through social audit create an opportunity to compare with actuals. See, actually, what is comparative? Actually, what happens during the entire process of data collections, you need to compare actually what is there in the paper, or what has been documented in the documents. That has to be validated and triangulated through the through different stakeholder and through the interactions with the different beneficiaries who has actually taken the benefit of these programs. Okay, so this is this has to be triangulated actually through different stakeholder, whether actually what is being mentioned in the paper, whether it has been delivered or not, and the actual beneficiary actually benefited or not. That has to be checked in the entire process. Then the verifications. Information generated during the social audit is a source of verification of the report and delivery. Whatever the once this is once you have collected the data and the information is collected, suppose you will be connecting doing a social audit of for example, ICDS programs, because ICDS there are different entitlements are being ensured, guaranteed under ICDS programs. So we have to see whether if it is the stipulated entitlements which is being mentioned in the scheme are being delivered or not to the respected beneficiary. If they say there are 5 in the record, will you come to know that there are 5 children have been immunized. Who are these 5 children in the village when they have been immunized? Okay, so these are the kind of things we have to meticulously look at and verify and prepare report, so that a very validated report is being presented in your Jan Sunwai in the last date of your social audit. Okay. Okay, so Kanpai, just one request, if you can use some Hindi language in between also, that would be fine. There is some requests. Yes, I'll do that. Okay, yeah. See, this is a problem. So हम लोग वही बात कर रहे थे, जो सोशल ऑडिट हम सोशल ऑडिट क्या है, इसको क्यों करना चाहिए, और उसका क्या क्या प्रिंसिपल को हम ध्यान देना चाहिए. मैं पहले हिंदी में उसको ब्रीफ कर देता हूँ, सो फिर हम इस स्लाइड को फिर ये करते हैं. एक तो सोशल ऑडिट हम करते हैं जवाबदारी और जो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने के लिए कोई भी प्रोग्राम में और कोई भी गवर्नमेंट के स्कीम के अंदर. और इस ऑडिट में एक्चुअली जैसे दूसरे फाइनेंशियल ऑडिट में जैसे एक फाइनेंशियल ऑडिटर अपॉइंट करके किया जाता है, सोशल ऑडिट में कोई
प्रोफेशनल ऑडिटर नहीं होते, लोग खुद ऑडिटर बनते हैं और वो स्कीम को ऑडिट करते हैं। और ऑडिट करने के टाइम पे कुछ कुछ चीजों को हमको ध्यान देना बहुत जरूरी होता है। जैसे मैंने बोला, इसमें सारा स्टेक होल्डर का व्यू पॉइंट को रखना चाहिए। और ये बता रहा था जे ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए, ऐसा नहीं एक बार ऑडिट किया फिर छोड़ दिया, ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। और ऑडिट करने के बाद जो फाइंडिंग आता है, वो फाइंडिंग को अच्छे से एनालिसिस करके एक जो जो फाइनल डे के दिन, जो ऑडिट का जो फाइनल डे होता है, जिसको जन सुनवाई करके हम खत्म करते हैं, उस जन सुनवाई के दौरान ये एक अच्छा इंफॉर्मेशन सबके सामने रखा जाए, सो दैट जो रेस्पेक्टिव जो ऑफिसर जन सुनवाई में भाग लेते हैं उनको वो उसके ऊपर वो एक्शन ले सके, इस तरह का होता है। और खासकर सोशल ऑडिट के दौरान हमको ये भी ध्यान देखना चाहिए, ये हमारा समाज में जो सबसे जो अंतिम बेनिफिशियरी हैं, जो जो दलित और आदिवासी वर्ग, जो मोस्ट मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है, उनको वो स्कीम का बेनिफिट मिला है कि नहीं मिला है, ये भी ध्यान में रख के किया जाता है। ओके, ये सब मैं बात कर रहा था। तो अभी हम बात करेंगे पर्पस ऑफ सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट हम क्यों करते हैं, इसको सिमिलर चीजें एक तो है, ये जो हमारा जो इट स्ट्रेंथन द ग्रासरूट लेवल डेमोक्रेसी, जो जमीन स्तर पे जो गणतंत्र है, ये उसको वो मजबूत बनाता है, क्योंकि इसमें आप देखेंगे सोशल ऑडिट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेशन के साथ है। इसमें क्या करता है ना, इस सोशल ऑडिट के माध्यम से we got an opportunity to address different socio-economic dynamics, and और उसके दौरान एक सोशल प्रेशर ग्रुप भी समुदाय के अंदर बनता है। क्योंकि आप जब एक स्कीम के बारे में जाके वो एक जब सोशल ऑडिट का प्रोसेस शुरू हो जाता है, कोई पंचायत में कोई गांव में शुरू हो जाता है, एक ऐसा एक माहौल बन जाता है जो लोग उस स्कीम को इम्प्लीमेंट करने के लिए जिम्मेदार है, उनके ऊपर एक प्रेशर बनता है। ओके, ये भी एक प्रक्रिया उसके दौरान वो क्रिएट होता है। तो इसलिए हमारा इस प्रोसेस के दौरान हमारा जो जमीन स्तर पे जो डेमोक्रेसी है वो मजबूत होता है। फिर ये बोलता है, फिर सेकंड बोल रहा है, इट आल्सो एम्प्लॉय सोशल कैपिटल एंड प्रमोट कल्चर ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी एट वेरियस लेवल्स। इसके दौरान ये सोशल कैपिटल को हम एम्प्लॉय करते हैं। सोशल कैपिटल का मतलब है आपका जो नेटवर्क्स, आपका जो रिलेशनशिप विद प्रोफेशनल एसोसिएशंस, जो है, बहुत लोगों का मदद लेके आप उसको करते हैं। और इसके साथ साथ इसके दौरान एक जवाबदारी का और एक जिम्मेदारी बनाने का एक कल्चर प्रमोट करता है। ओके, और थर्ड में बोल रहा है, इट मोबिलाइज पंचायत रिप्रेजेंटेटिव एंड फंक्शनरीज एंड सर्विस प्रोवाइडर फॉर इंश्योरिंग इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। ये एक्चुअली इसके दौरान जब हम सोशल ऑडिट करते हैं, both the people as well as the जो पंचायत लेवल पे जो लोग the elected representative as well as the representative from the government, they also play very critical role in the entire process। तो इसीलिए उनका भी एक जवाबदारी इंश्योर करता है। और फोर्थ में बोल रहा है, to share the allocated budget and expenditure incurred during the implementation with larger community groups at the community platform in the presence of different stakeholder। इस प्रक्रिया के माध्यम से हम क्या करते हैं ना, कोई भी स्कीम के लिए जो बजट एलोकेट किया गया है उसका खर्च कैसे हुआ है और किस तरीके से हुआ है, अलग अलग लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम जानने का मौका मिलता है। और ये भी एक लोगों को एक मौका देता है, जो ड्यूटी जो बियरर होते हैं उनको क्वेश्चन करने का, उनको अकाउंटेबल बनाने का एक मौका बनता है। एक एक्चुअली सोशल ऑडिट में क्या होता है, लोग जन सुनवाई में इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस, पीपल आस्क द क्वेश्चंस। व्हेन आप जब सोशल ऑडिट खत्म करके
रिपोर्ट जब वो जनसुनवाई में जाके शेयर करते हैं, जब बेनिफिशियरी आके अपना टेस्टिमनी शेयर करता है, उसके दौरान वो जो जिम्मेदारी जो ऑफिशियल्स हैं, जो जिम्मेदारी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनके और उनके बीच में एक रिश्ता बनता है, और वो बोथ ऑफ देम फील अकाउंटेबल एंड रेस्पॉन्सिबल टू ईच अदर। ये भी एक कल्चर प्रमोट करता है। एंड इट ऑल्सो बिल्ट ए सोशल प्लेटफॉर्म फॉर पुअर एंड वनरेबल। ये मैंने ऑलरेडी बोल चुका है। एक डिमांड भी क्रिएट करता है एक्चुअली, जो खासकर जो जो समाज में जो कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, जो जिसको समाज में सबसे अलग रखा गया है, उनके बीच में एक अवेयरनेस पैदा होता है, और उनका एक डिमांड बनता है अपना राइट्स और एंटाइटलमेंट के लिए। मेरा हक क्या है, मेरा अधिकार क्या है, उसके लिए उसके दौरान एक जुनून पैदा होता है। और सबसे बड़ा चीज है, इट प्रिवेंट करप्शन बाय डिस्प्लेइंग अकाउंट्स आल्सो। ये सबसे बड़ा चीज है जो सोशल ऑडिट का जो मेन, ये जो करप्शन को प्रिवेंट करता है, रुकवाता है। ओके, ये है। फिर हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा मेरे को लग रहा है ये थियोरेटिकल हो जा रहा है, क्योंकि सोशल ऑडिट कॉन्सेप्ट पहले थोड़ा हमको समझ में आ जाए, तो हम लोग जब फिजिकली 1-to-1 हम मिलेंगे, हम वी कैन उसको और अच्छी तरीके से, हम एग्जाम्पल के तरीके से, रोल प्ले के माध्यम से उसको हम समझ पाएंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा हाउ टू कंडक्ट सोशल ऑडिट। जो सोशल ऑडिट आप कैसे कर सकते हैं, बहुत सारा तरीका होता है सोशल ऑडिट करने के लिए। पहले बोल रहा है थ्रू कंडक्टिंग पब्लिक मीटिंग एंड सोशल गैदरिंग। एक तो है आप कोई भी पंचायत में एक पब्लिक मीटिंग करके, और मीटिंग के करने के पहले बहुत सारा प्रोसेस होता है, वो मैं नेक्स्ट सब्सिक्वेंट स्लाइड में आपको मैं बताऊंगा। You can conduct social audit to a public meeting. You can organize a public meeting, and in the public meeting we can nominate different people and assign different role to different different people in the meetings, and उसमें वो अलग अलग ये करके वो कंडक्ट सवाल पूछ के स्कीम के बारे में ये करके वो कर सकते हैं। और एक तो है थ्रू ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक हियरिंग इवेंट्स। पब्लिक हियरिंग करके भी आप कर सकते हैं। पब्लिक हियरिंग क्या क्या होता है ना, जैसे एक जनता जो सवाल पूछती है, और जो जिम्मेदार ऑफिशियल्स है, जो ऑफिशियल्स और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपना वो जवाब रखते हैं। ये एक प्रक्रिया होता है। खुद बेनिफिशियरी आके पूछता है मीटिंग पब्लिक हियरिंग में, जे मेरे को जो स्कीम था मेरे को क्यों नहीं मिला, और जो एक्स बस्ती के लिए जो 5 लाख का जो रोड सैंक्शन होके आया था, वो हमारा बस्ती में अभी तक क्यों नहीं हुआ, उसका कारण क्या है। इस तरह का वो एक प्रक्रिया में पूछते हैं, फिर वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अपना जवाब रखते हैं। फिर थर्ड बोल रहा है थ्रू पार्टिसिपेटरी बजट ट्रैकिंग इवेंट। एक बजट ट्रैकिंग का भी एक प्रक्रिया होता है, और उसको पार्टिसिपेटरी तरीके से लोगों को अलग अलग ट्रेनिंग दे के आप इस तरह का भी प्रोसेस कर सकते हैं। फिर सर्विस असेसमेंट इवेंट्स, अलग अलग इवेंट्स करके जो पंचायत में वार्ड में जो स्कीम चल रहा है, उनका क्या क्या सर्विस मिल रहा है, उसका असेसमेंट करके भी आप सोशल ऑडिट कर सकते हैं। ये है। फिर नेक्स्ट में मैं बात करने वाला हूँ हु शुड पार्टिसिपेट इन सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट में हमको किसको भाग लेना चाहिए। ये खासकर ये जो मैं स्टेक होल्डर का नाम ले रहा हूँ, दिस इज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओनली द सोशल एंटाइटलमेंट प्रोग्राम्स, जो खासकर और रूरल कॉन्टेक्स्ट में, पंचायत के कॉन्टेक्स्ट में ये सब लिखा गया है। खासकर people who suffer due to bad governance or are the victim of abuse and authority by the government personnel। इसमें ये लोग खासकर जो बेनिफिशियरीज हैं, जो स्कीम का, सपोज आप आईसीडीएस का
ऑडिट करेंगे। आईसीडीएस में क्या क्या हुआ है, क्या क्या फायदा हुआ है, कौन कौन बेनिफिशियरी को मिला है, उसको जानने के लिए। तो आईसीडीएस का जो बेनिफिशियरीज है जिसको नहीं मिला है, वे लोग को ही उसमें शामिल करना बहुत जरूरी होता है। दे शुड कम एंड लीड द एंटायर प्रोसेस, उसका जो रियल बेनिफिशियरीज है। फिर देन विलेज लीडर एंड कॉमन पीपल, जो गांव के जो लोग होते हैं, जो गांव में जो अलग अलग लीडर होते हैं, जो नेताएं होते हैं गांव का, कम्युनिटी बेस्ड लीडर होते हैं, उनको ये प्रोसेस में भागीदारी लेना चाहिए। फिर जो कम्युनिटी फोरम्स, गांव में जो अलग अलग कम्युनिटी बेस्ड फोरम होते हैं, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो गया, यूथ क्लब हो गया, बहुत सारे रिलीजियस बेस्ड ग्रुप भी होते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, उनको भी आप उस प्रोसेस में शामिल कर सकते हैं। फिर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आप देखेंगे तो जो पंचायत स्तर में सरपंच जो और जो वार्ड मेंबर जो होते हैं, उनको भी इस प्रोसेस में दे कैन बी पार्ट ऑफ द सोशल ऑडिट प्रोसेस। सीनियर गवर्नमेंट अथॉरिटीज रेस्पॉन्सिबल जो, और इसमें जो सपोज आप आईसीडीएस में आईसीडीएस का कर रहे हैं, तो उसका जो डिपार्टमेंट संबंधित जो पंचायत स्तर पे और जो ब्लॉक स्तर पे जो ऑफिशियल्स लोग हैं, उनको भी आप इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। और लाइन डिपार्टमेंट फंक्शनरीज, आईसीडीएस है तो आईसीडीएस है तो मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड डब्ल्यूसीडी डिपार्टमेंट के अंदर वो आता है। उसका लाइन डिपार्टमेंट में जो ऑफिशियल्स है और उसका जो सब्सिडियरी जो डिपार्टमेंट है, उनका ऑफिशियल को भी उसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। और मीडिया पर्सन, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू involve the media people in the social audit process, but you have to look at its relevance. Sometime मीडिया पीपल जब आ जाते हैं, मीडिया पीपल मतलब यू कैन से रेस्पॉन्सिबल मीडिया पर्सन, क्योंकि मेरा अनुभव है कभी कभी मीडिया में जो लोग सोशल ऑडिट में आते हैं, कुछ वो देखते हैं जाके दूसरा कुछ रिपोर्ट कर देते हैं, वो बाद में फिर जो ऑर्गेनाइजेशन करता है सोशल ऑडिट, उनके लिए दिक्कत हो जाता है। तो उनको जब आप इन्वॉल्व करेंगे, पहले उनको सेंसिटाइज कीजिए क्या लिखना है, वो थोड़ा सेंसिटाइज करने के बाद यू हैव टू इन्वॉल्व द सेंसिटाइज मीडिया पर्सन्स इन द एंटायर प्रोसेस। और क्योंकि ये भी इसके एक डिमांड क्रिएट होता है, जब वो पेपर में निकल जाता है जो इस गांव में इस तरह का सोशल ऑडिट हुआ, इसमें ये निकल के आया, तो उसके ऊपर फिर एक्शन लेना शुरू हो जाता है। डिपार्टमेंट बिकम मोर प्रोएक्टिव इन रेस्पॉन्डिंग दोज इश्यूज, ये भी एक होता है। फिर सीएसओ रिप्रेजेंटेटिव, सीएसओ मीन सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव, इसमें सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का रोल एक फैसिलिटेटर रोल अदा करना होता है। वो पूरा एंटायर प्रोसेस में इन टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक मोबिलाइजेशन, प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट, ये सीएसओ रिप्रेजेंटेटिव का एक रोल होता है। ओके, ठीक है। फिर इसमें हम करने से क्या अचीव कर पाएंगे, इसमें बहुत सारा बेनिफिट होता है एक्चुअली। जैसे पहले भी हम इंट्रोडक्शन में भी बोल चुके हैं, देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ सोशल ऑडिट। वन इज इट हेल्प्स इन ट्रैकिंग ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। जो पॉलिसी है, whether it help us whether the policy is being implemented in a right direction or not, through the audit process we are able to know that। ये एक होता है, हम जान पाते हैं ये जो पॉलिसी ठीक से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट प्रोग्राम एंड स्कीम्स, जो गवर्नमेंट प्रोग्राम और स्कीम होता है, जैसे हो गया आईसीडीएस हो गया, पीडीएस हो गया, मिड डे मील प्रोग्राम हो गया, मनरेगा हो गया, ये जो सारा जो स्कीम है, उसका भी हम जानकारी लेने के लिए क्या करते हैं, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ बजट। इसमें बजट का सही तरीके से यूटिलाइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके दौरान है हम पता चलता है। एंड ये ऑल दोस प्रोसेस आर वेरी वेरी डिटेल। आपको इस प्रोसेस में जाने के लिए सबको हमको बजट को कैसे देखना है, मनरेगा का देखना है तो आईसीडीएस का ऑडिट हमको करना है तो आईसीडीएस को कैसे देखना है, ये सब अलग अलग फिर उसका मॉड्यूल से उसका प्रोसेस है। मैं इस सेक्शन में नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, उसको हम अलग तरीके से जब मिलेंगे फिर बात करेंगे। फिर इट ऑल्सो इंक्रीज अकाउंटेबिलिटी, ये जवाबदारी जैसे मैंने बताया तय करता है। एंड ऑल्सो इट मेक्स द गवर्नमेंट
more responsive to the poor, especially Dalit, Adivasi and women, जो खासकर इस प्रोसेस में गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट का ऑफिसर लोगों को रेस्पॉन्सिबल बनाता है, जो समाज के जो दलित आदिवासी लोगों के लिए, ये एक अच्छा चीज होता है। मेकिंग द गवर्नमेंट सिस्टम वर्क फॉर द पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड, सिस्टम को भी जिम्मेदार बनाता है, उनका ऑफिशियल को भी जिम्मेदार बनता है। और फाइनली जैसे गुरु बता रहे थे, इट ओवरऑल फाइनली इट प्रमोट्स गुड गवर्नेंस, एक गुड गवर्नेंस भी प्रमोट करता है। ओके, ये हम ये करेंगे। फिर हम उसको बात करेंगे उसका क्या लेजिस्लेटिव सोशल ऑडिट का स्थान हमारा इंडियन लेजिस्लेशन का संदर्भ में बात करेंगे, उसका लीगलिटी के संदर्भ में बात करेंगे। तो उसका वो कहाँ है उसको थोड़ा आपको समझना बहुत जरूरी है। जब आप जाएंगे, सपोज कोई भी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ऑडिट शुरू करना चाहता है, तो आपको पहले सवाल करेंगे। ग्राम पंचायत में, आप कोई भी पंचायत में जाएंगे तो कलेक्टर से लेके पंचायत ऑफिशियल तक आपको सवाल करेंगे, आप कौन होते हैं ये सब करने के लिए। ये सवाल आएगा, बट ये सवाल को जवाब देने के लिए आपके पास सॉलिड पूरा इंफॉर्मेशन होना चाहिए। एक तो है जब 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, उसमें एक्चुअली 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो 92 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसमें ग्राम सभा को बहुत सारा पावर दिया गया, और उसी अमेंडमेंट में सोशल ऑडिट का जिक्र भी किया गया है। और उसमें सुप्रीम कोर्ट का भी, इन एडिशन टू दैट, एक सुप्रीम कोर्ट का भी एक ऑर्डर भी है, जे कोई भी ग्राम सभा अपना रेजोल्यूशन पास करके, ग्राम सभा इज इंडिपेंडेंट टू पास ए रेजोल्यूशन टू हैव ए इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट ऑफ देयर प्रोग्राम्स, ये कर सकता है। ओके, इसमें कोई गवर्नमेंट का सर्कुलर का जरूरत नहीं है, कोई कलेक्टर का नोटिफिकेशन का भी जरूरत नहीं है। फर्स्ट आप क्या करेंगे, आप ग्राम सभा में जाइए, बात कीजिए, ग्राम सभा में रेजोल्यूशन पास कीजिए जो हम इस पंचायत में ग्राम सभा है टू सीट, जो 2/3 मेजोरिटी में है, वो रेजोल्यूशन अप्रूव होना चाहिए। अप्रूव होने के बाद पंचायत में भी वो थोड़ा उसका एंडोर्समेंट होना चाहिए, फिर आप वो प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। और कोई भी सपोज ऑफिशियल उसको क्वेश्चन करे, आप वो रिजोल्यूशन को साथ चिट्ठी के साथ उनको दे सकते हैं। दिस इज द ग्राम सभा डिसीजन, ग्राम सभा निर्णय लिया है इस तरह का प्रोसेस करने के लिए, ये एक सबसे बड़ा लीगलिटी है उसका। उसके साथ साथ आप बहुत सारे साथी जो लोक मंच के हैं, दे मस्ट हैव ऑपरेटिंग शेड्यूल एरिया में, जो 7th अमेंडमेंट जो किया गया है, उसमें शेड्यूल एरिया के लिए खासकर सोशल ऑडिट करने का, जो जितना डेवलपमेंट प्रोग्राम चल रहा है उसका करने का प्रावधान भी रखा गया है। दे कैन ऑल्सो कंडक्ट द सोशल ऑडिट। इसके साथ साथ हमारा जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ है 2005 में, which is in which every citizen is entitled to inspect the government program and they can sample test the quality of implementation। ये एक जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में भी लिखा गया है। सो जे all citizens are entitled to have informations। ओके, ये इस तरीके में भी उसका जिक्र किया गया है सोशल ऑडिट का। और तीसरा जो है, आप देखेंगे जो एक मनरेगा स्कीम जो चल रहा है, 100 डेज जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम है, उसके अंदर भी सोशल ऑडिट को मैंडेटरी किया गया है। सोशल ऑडिट हैज टू बी डन एंड इट हैज टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन दी स्कीम्स, उसके अंदर भी जिक्र किया गया। तो उसके साथ साथ सोशल ऑडिट को भी बहुत सारा स्टेट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज किए हैं। उसके साथ साथ हमारा तो सीएजी, जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, सीएजी जो है, which is the top most accounting body, umbrella body of India, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आता है, उसको भी रिकॉग्नाइज किया है। और वो बोला है इट इज ए पावरफुल टूल टू एनफोर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। ओके, सो दीज आर द लीगलिटी ऑफ द सोशल ऑडिट। और बहुत सारा स्टेट ने अपना एक इंडिपेंडेंट सोशल ऑडिट यूनिट भी सेटअप किए हैं। ओके, तो उनसे भी आप सहयोग लेके भी आप इस तरह का ऑडिट प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। ये है। ओके, फिर हम बात करेंगे
जयंत अभी कितना टाइम अभी बचा है? We have time, so you Okay. can go up to to finish things. हाँ हाँ नो एक्चुअली इसके बाद मेरा और एक प्रेजेंटेशन है क्योंकि उसमें सोशल ऑडिट कमेटी का क्या रोल है, मैं भी ओके तो ये मैं पहले जो बात कर रहा था, these are the very theoretical and academic things I have been telling you, क्योंकि ये सब because a sound academic understanding will help you to conceptualize, understand and implement the things at the field level in a very strong way. तो उसको करने के लिए एक्चुअली एक उसको बोलते हैं 10 स्टेप प्रोसेस हमको फॉलो करना है। कोई भी गांव में सब पंचायत स्तर पर हम लेट अस थिंक अबाउट जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी आप मान के चलिए, हम पंचायत स्तर पे हम सोशल ऑडिट करेंगे। तो उसी संदर्भ में अभी मैं बात करूंगा। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तो यू हैव टू पास द फर्स्ट स्टेप इज टू आइडेंटिफाई विलेज एंड स्टेक होल्डर एंड हैव एंड टू एस्टेब्लिश इनिशियल कॉन्टेक्स्ट। आपको सोशल ऑडिट करने के लिए पहले आपको एक गांव, एक पंचायत का गांव चुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी क्योंकि यू नीड ए कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड यू नीड टू ऑडिट, यू नीड टू ऑडिट द एंटाइटलमेंट स्टेटस ऑफ ए पर्टिकुलर विलेज। तो उसको वो एक आपको एक रेवेन्यू विलेज आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। और आइडेंटिफाई करने के बाद ऐसा नहीं है, इसके पहले यू हैव टू डू लॉट ऑफ एक्सरसाइज, यू हैव टू गो एंड बिल्ड योर रैपो एंड आइडेंटिफाई सम ऑफ द क्रिटिकल स्टेक होल्डर एंड अंडरस्टैंड द पावर डायनामिक्स, क्या कास्ट स्ट्रक्चर क्या है, सोशल स्ट्रक्चर क्या है, जेंडर डायनामिक्स क्या है, वो सारा देख के ही आपको उसको प्लान करना बहुत जरूरी है। तो इनिशियल स्टेज में आइडेंटिफाई द विलेज and identify then the stakeholder from the village and have build rapport with the community, so that and identify which are the strength and weaknesses that will help you in terms of conducting a strong social audit process within this particular village. और जैसे फादर बोल रहे थे, it is very very important to customize your intervention based on the source power dynamics of that particular village. आप एक जो आंध्र का एक विलेज में जो कर रहे हैं, जाके उड़ीसा का विलेज में, वो दैट माइट नॉट वर्क बिकॉज उसका पावर डायनामिक्स अलग है, उसका जो सोशल स्ट्रक्चर अलग है। तो उसको जाके आपको वहां पे यू हैव टू डू इट इन ए वेरी कस्टमाइज्ड एंड ए वेरी डिफरेंट वे, लुकिंग एट द रियल प्रैक्टिकल इश्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर एरियाज, उसको देख के ही करना है। फिर जाके सेकंड लेवल पे एक बार आप विलेज आइडेंटिफाई कर दिए, लोकल स्टेक होल्डर आइडेंटिफाई कर दिए, सेकंड फेज में आपको इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट अवेयरनेस इन द पंचायत। आप किस किस मुद्दे के ऊपर सोशल ऑडिट करेंगे। सपोज आप 4 एंटाइटलमेंट स्कीम का मान के चलिए, फॉर एग्जाम्पल जयंत, आप कौन कौन एंटाइटलमेंट स्कीम का मॉनिटरिंग आप करते हैं? PDS, MDM, हाँ, फॉर एग्जाम्पल में एनडीएम हो गया, जो तो बोल रहे थे, पीडीएस हो गया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें राशन मिलता है, फिर मिड डे मील हो गया। सो दीज आर द एंटाइटलमेंट प्रोग्राम्स एक्चुअली स्कीम्स। तो उसको इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहले जो पर्टिकुलरली जो बेनिफिशियरीज है उनके बीच में उस स्कीम के ऊपर अवेयरनेस क्रिएट करो, वो स्कीम क्या है, वो स्कीम के अंदर क्या क्या एंटाइटलमेंट रखा गया है, क्या क्या प्रोविजन है, किस तरीके के वो मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, हु आर द एलिजिबल पीपल, जिसको मिल रहा है क्या, वेदर दे आर एलिजिबल और नॉट। वो क्रिएट करने के बाद एक बार उनका जैसे वंस ही क्रिएट द अवेयरनेस, डिमांड विल कम्स। अरे जब उनको पता चल जाएगा, वो एक डिमांड उनके बीच में वो रेज होके आता है, वो सारा स्कीम के अंदर एक माहौल वो क्रिएट करता है इस प्रोसेस के दौरान। फिर आप जब डिमांड एक बनता है, नेक्स्ट फेज में आपको फॉर्मेशन ऑफ सोशल ऑडिट टीम। तो सोशल ऑडिट टीम फॉर्मेशन के लिए एक अलग मैंने पीपीटी बनाया है, इफ पॉसिबल आई विल शेयर, और अदरवाइज मे बी शेयर इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, इसमें क्या करते हैं, फिर आपको एक सोशल ऑडिट टीम
वो पंचायत में, वो गांव में आपको बनाना पड़ेगा। सोशल ऑडिट टीम जनरली उसका स्ट्रेंथ 7 to 8 पीपल होना चाहिए, बेस्ड ऑन द कॉम्पिटेंसी एंड स्किल ऑफ द पीपल। जो जो गांव में जो जो रिसोर्सेस, जो जो स्किल अवेलेबल, उनको लेके फिर उनका एक कमिटी बनना पड़ता है। और वो कमिटी को आपको ओरिएंट करना पड़ेगा, ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द एसएटी। एसएटी मतलब सोशल ऑडिट टीम। और कमिटी में आपको पहले मैं बता रहा था किस किस लोगों को आप रख सकते हैं कमेटी में। आप देखिए जो 1 मिनट, एक मिनट। हेलो। Yes, sir. Yes. यस यस यस। हाँ, ये सोशल ऑडिट जो कमिटी बनने के बाद, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन देम ऑन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सोशल ऑडिट इन टर्म्स ऑफ डेटा कलेक्शन कैसे करना है, व्हाट वुड बी द फॉर्मेट। फॉर्मेट को जो बनेगा, सपोज आप वो पीडीएस के ऊपर करेंगे तो पीडीएस के ऊपर 3-4 पेज का एक फॉर्मेट होता है। इट हैज टू बी वेरी सिंपल एंड नॉट सो बी सो कॉम्प्लिकेटेड। इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन करना है, कैसे कलेक्ट करना है, और किस किस जगह से वो इंफॉर्मेशन मिलेगा। That is also they should know it, so that it will be very easy for them to collect those informations. Suppose for ICDS के लिए अलग स्टेक होल्डर है, अलग बेनिफिशियरी है, एमडीएम का अलग है। उनको इस प्रोसेस में ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, कैसे डेटा कलेक्शन करना है, फिर डेटा को लाने के बाद उसको हाउ द डेटा कैन बी एनालाइज्ड इन अ वेरी सिंपल वे, वो करना पड़ता है। एक बार ट्रेनिंग के बाद नेक्स्ट फेज में इट इज वेरी, आपको एक ग्राम सभा मीटिंग करके रिजोल्यूशन भी पास करना बहुत जरूरी है। कभी कभी क्या होता है ना, हमारा एक जनरल परसेप्शन बना हुआ है जो गवर्नमेंट जो का सर्कुलर आता है तो सोशल ऑडिट होता है, बट इट्स नॉट लाइक दैट। सोशल ऑडिट ग्राम सभा खुद भी अपना रेजोल्यूशन पास करके भी करा सकता है। सपोज इफ यू वांट, आप ग्राम सभा का जो स्टेक होल्डर होते हैं, उनसे बात करके आप ग्राम सभा मीटिंग बुला के रिजोल्यूशन पास किया जाता है। और वो रिजोल्यूशन बहुत पावरफुल होता है। ओके, हेलो। हाँ Yes, sir. हाँ, ये जो ग्राम सभा में आप एंड ये रेजोल्यूशन ऑफिशियली उसको 2/3 मेजोरिटी में अप्रूव कराइए, उसको स्टाम्प लगा के उसको रिजोल्यूशन को रखिए। और एंड दिस रिजोल्यूशन बाय वर्च्यू ऑफ दिस रेजोल्यूशन, और उस रिजोल्यूशन में पास कीजिए, आप ले सकते हैं ग्राम सभा में। आप उसको बता सकते हैं, रिजोल्यूशन में मेंशन करेंगे ये सोशल ऑडिट कंडक्ट करने में इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हमको हमको मदद करेगा, वो फैसिलिटेट, वी वुड लाइक टू टेक द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इन फैसिलिटेटिंग, और वी आर इनवाइटिंग दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटेटिंग दिस सोशल ऑडिट प्रोसेस। आपका ऑर्गेनाइजेशन का एक लेजिटिमेसी भी बन जाता है। ये भी आप करा सकते हैं इस प्रोसेस के दौरान। ओके, और ये एक बार रेजोल्यूशन बन जाएगा, कोई आपको रोक नहीं सकता। इवन द कलेक्टर को भी आप चैलेंज कर सकते हैं, वीडियो, खासकर वो लोग जो होते हैं ये प्रोसेस कोई भी आप जाके शुरू करेंगे तो उसका बहुत सारा रेजिस्टेंस शुरू हो जाता है। बट इस रेजिस्टेंस को कम करने के लिए इस सारा प्रोसेस का फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। ओके, फिर एक बार वो रिजोल्यूशन पास होने के बाद, देन इन्फॉर्मिंग द स्टेक होल्डर एंड इन्विटेशंस। आप क्या करेंगे, सारा स्टेक होल्डर को उस इन्फॉर्म करेंगे। सपोज पंचायत सेक्रेटरी को आप चिट्ठी देंगे कि they we have decided to have to conduct the social audit of these 3 program schemes, so MDM, ICDS, and PDS on this particular day, so you are invited to present and share your जो भी लिखते हैं वो आप एक इनविटेशन देंगे। सारा जो पंचायत में गांव में जो स्टेक होल्डर उनको भी इनवाइट करेंगे। यू कैन इनवाइट द मीडिया पर्संस, वो सब वो करके ये करेंगे ये के लिए। फिर इनविटेशन देने के पहले जब ये सब पैरेलली प्रोसेस चलेगा, फिर एविडेंस एंड डेटा कलेक्शंस।
एक बार ग्राम सभा का इलेक्शन कहने के बाद आप टीम अलग अलग टीम बनाइए। सपोज आप 3 प्रोग्राम का कर रहे हैं तो देन द नंबर स्ट्रेंथ ऑफ द सोशल ऑडिट कमिटी थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा। और जब आप कमिटी बनाएंगे उसमें कमिटी को भी इंक्लूसिव बनाइए। सोशल ऑडिट टीम का जो बनाएंगे क्योंकि उसमें इंश्योर कीजिए देयर इट शुड बी इंक्लूसिव इन टर्म्स ऑफ जेंडर and also in terms of caste and also socio economic बैकग्राउंड। क्योंकि आप बहुत सारा जैसे महिला बेनिफिशियरी होंगे जिसके साथ बात करने के लिए सोशल ऑडिट टीम में महिला सोशल ऑडिटर रहना बहुत जरूरी है। ये भी इंश्योर करना बहुत जरूरी होता है बिकॉज दे विल बी मोर कंफर्टेबल एंड इन टर्म्स ऑफ गेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दोज स्टेक होल्डर्स एंड बेनिफिशियरीज। ये भी इंश्योर कीजिए। ये एविडेंस एक्चुअली जब डेटा एंड एविडेंस कलेक्शन एटलीस्ट 2 दिन का प्रोसेस होता है। वो जाके बेनिफिशियर को मिलते हैं, बात करते हैं, वो डेटा भर के फिर सारा टीम एक साथ बैठ के उसको एनालिसिस करता है। एनालिसिस करने के बाद जो पर्टिनेंट जो रिलेवेंट और उसके दौरान भी आप जब while doing this data collection and evidence collection you have to also identify certain beneficiaries who will be also and motivate them to be available for the public hearing। उस दिन जो आपको जो information आपको जो शेयर करेंगे they should be also sharing the same information in the public hearing जब आप ये करेंगे। एक बार रिपोर्ट तय हो गया, रिपोर्ट बन गया तो आप क्या करेंगे उसको एक दिन आप तय कीजिए पब्लिक हियरिंग के लिए। पब्लिक हियरिंग जो बोलते हैं जन सुनवाई जिसको हम बोलते हैं। पब्लिक हियरिंग में क्या क्या होता है ना, पब्लिक वो सारा तथ्य को सरकार के सामने जो जिम्मेदार ऑफिशियल के सामने जैसे मैंने बता रहा था वो रखते हैं। पब्लिक हियरिंग का भी एक अलग प्रोसेस होता है। कैसे उनका क्या फॉर्मेट होना चाहिए, क्या क्या लॉजिस्टिक हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। इट्स वेरी वेरी क्रिटिकल, अदरवाइज इट कैन बी अ मेस। और इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज द पावर डायनामिक्स। क्योंकि पब्लिक हियरिंग में बहुत सारा मेरा जो अनुभव है, हम जब बहुत सारा जगह पे किए हैं। आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ कंडक्टिंग पब्लिक हियरिंग इन बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश। समटाइम इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। कभी कभी वो होते हैं ना, वो पावर डायनामिक्स को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस सारा चीजों को ध्यान रखते हुए आपको लोगों का सपोर्ट लेके उसको बहुत स्ट्रेटेजिकली आपको मैनेज करना है। पब्लिक हियरिंग में पहले मीडिया को भी आप बुलाएंगे पब्लिक हियरिंग में, और सरकारी ऑफिसर जो है, जो लाइन डिपार्टमेंट जो ऑफिशियल होते हैं उनको भी बुलाएंगे। और उस दिन लॉजिस्टिक इन टर्म्स ऑफ एक माइक्रोफोन जो लाउड स्पीकर रहना चाहिए क्योंकि बात करने के लिए बहुत सारा लोग जम जाते हैं। तो उसको पूरा प्लान तरीके से सब पावर डायनामिक्स रिस्क एनालिसिस करके ही करना है। क्या क्या रिस्क हो सकता है, ये रिस्क होगा तो हम क्या स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं उसको मैनेज करने के लिए, ये सारा देखते ही उसको करना बहुत जरूरी होता है। पब्लिक हियरिंग में लोग क्या करते हैं ना, वो रिपोर्ट को आप प्रेजेंट करते हैं सरकार के जो ऑफिशियल के सामने। और कुछ 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 जो बेनिफिशियरीज जो अपना जो कुछ फीडबैक होते हैं, जो उनका जो एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं। ये क्यों नहीं हुआ, हमारा गांव को रास्ता 2 साल पहले सैंक्शन हुआ था अभी तक नहीं मिला है, ये हमारा गांव का रास्ता दूसरे गांव में बन गया। तो इस तरह का बहुत सारा, जैसे एमडीए क्वालिटी ऑफ मील इज वेरी पुअर डिस्पाइट रिपीटेड रिक्वेस्ट, हमको अंडा नहीं मिलता है। दिस काइंड ऑफ थिंग्स जनरली कम्स। बट ये सारा चीजों को बहुत स्ट्रेटेजिकली आपको शेयर करना चाहिए। गांव में और क्या क्या हो सकता है, वो बहुत सारा चीजों को आपको उसके सामने रखना पड़ता है। एक बार पब्लिक हियरिंग के बाद वो सारा प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करना बहुत जरूरी होता है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डॉक्यूमेंट। एंड इसके प्रेस वाला भी आप इनवाइट कर सकते हैं सो दैट इट गेट्स आल्सो हाईलाइटेड इन द मीडिया। जैसे मैंने बताया मीडिया में एक बार जाता है तो एक पब्लिक प्रेशर सरकारी अफसर के ऊपर बनता है और उसके ऊपर एक्शन तुरंत हो जाता है। उसको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं। पब्लिक हियरिंग होने के बाद वो ऑफिसर जो आते होंगे वो बोलते हैं तो उसका रिपोर्ट हमको दे दीजिए। वो अलग अलग जब वो आईसीडीएस का बोलेगा ठीक है आप आईसीडीएस में क्या क्या इंप्रूवमेंट करना है, आपको एक अलग एप्लीकेशन के साथ उसको एक छोटा सा ब्रीफ बना के दे दीजिए। जैसे फादर स्टानी बोल रहे थे एडवोकेसी, हाउ वी कैन
advocate for the rights जो micro level का जो issue को कैसे हम highlight कर सकते, whatever the issue will identify through the entire audit process has to be taken forward to the government, otherwise it is meaningless doing the entire process. तो इसीलिए आपको क्या करना है, और उसको पब्लिक हियरिंग के बाद it is very very important to submit those reports to the line department. जे ICTS में हमारा 5 रिकमेंडेशन था, 5 उसका जो लाइन डिपार्टमेंट का ऑफिशियल है उसके साथ उसको स्टाम्प के साथ, पंचायत का स्टाम्प के साथ उसको आप सबमिट कर सकते हैं। MDM में ये चीज है, उसको भी आप ये कर सकते हो, तो लाइन अलग अलग करके उसको सबमिट करना बहुत जरूरी है। और उसके साथ सबमिट होने के बाद फॉलोअप भी उसका रेगुलर फॉलोअप होना बहुत जरूरी होता है। ओके, फॉलोअप कैसे करेंगे आप, एक टीम बनाइए, एक फॉलोअप टीम भी बनता है। एक जो वो जाके रेस्पेक्टिव जो लाइन डिपार्टमेंट है उनके साथ वो फॉलोअप करके वो पूछेंगे कि हम लोग जो चिट्ठी दिए थे, जो सबमिशन दिए थे, क्या हुआ, क्या एक्शन लिया गया। और ये आप मेरा अनुभव से मैं बता रहा हूँ, दिस सोशल ऑडिट हैज बीन ए वेरी वेरी इफेक्टिव एंड पावरफुल टूल इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द वर्क डन फॉर द पीपल। ये बहुत एक पावरफुल टूल है, इसीलिए उसको अभी बहुत सारे जैसे बता रहे थे नेग्लेक्ट किया गया है, उसको नहीं किया जाता है जानबूझ के। तो आप कोई भी पंचायत में जाके सोशल ऑडिट का बात करेंगे तो वो मना कर देंगे, बट आप उसको करा पाएंगे तो इट विल बी फैंटास्टिक एंड इट विल बी ए ट्रांसफॉर्मेशन, इट विल ब्रिंग मतलब लॉट ऑफ चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीपल एंड लाइफ ऑफ योर कम्युनिटीज वेयर यू आर वर्किंग। ये एक है, ये एक तरीके है। एंड ये जो मैंने इसमें 10 प्रोसेसेस है, इस 10 प्रोसेस, ईच प्रोसेसेस इज हैव डिफरेंट सब प्रोसेसेस। उसको हम जब मिलेंगे फिजिकली उसको हम डिटेल बात करेंगे, वर्चुअल सेशन में इतना कवर करना संभव नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा मैं उसको हाईलाइट करके थोड़ा हाईलाइट कर दिया। So these are the process of the social audit. Over to Sister Ruby and Jayanta. Is there any question? Maybe you can discuss. आपका जो सवाल है हम और उसमें और ज्यादा क्लैरिफाई कर सकते हैं, बहुत हिंदी या इंग्लिश में आप पूछ सकते हैं। You said yeah, okay. So you said also you have another slide. Yes. Okay. So we'll see how we can manage. Just we'll take up some questions. So friends, yeah. Now maybe Jayanta, we can skip this slide. Actually, this slide is related to role of a social audit committee, and the second one is role of Gram Panchayat in terms of conducting social audit. Maybe you can have it in separately in some other day. Okay. Let us take the questions also. Okay. Sukanta sir. Hello. Yes. Maybe briefly you could repeat for the English. I mean those who because there was more of Hindi. So maybe this process you could very briefly with some explanations. Okay. Yeah. So for conducting social audit, we follow 10. I am recommending 10 steps. The first step is it is very very important to identify the villages and the stakeholder, and then to have to build a good rapport with that villages. And the second step is to create awareness among the village or the panchayat where we are going to conduct the social audit. To create awareness about the among the people, particularly about the program which are to be audited. Particularly, if we're going to conduct the social audit of ICTS, it is very very important. People should know what are the main entitlements, what are the main provisions are being ensured for the beneficiaries. They should know, so that a demand would be generated, demand would be created among the beneficiaries. And the second step, the third step I am saying is the formation of social audit team. And I'm saying the social audit team has to be very inclusive.
it has to ensure it has to be a form at looking into the gender and also the caste and all other elements into mind, so that the team would be compatible in terms of collecting informations. So this is the third step. And the fourth step is the social audit team, which is formed at the panchayat level or the village level, has to be oriented to the various aspects of social audit, and they has to be oriented to the tools that are going to be used in the social audit process. And fifth is the Gram Sabha meetings and passing a resolution, because you need a need an endorsement letter, and here Gram Sabha is the main body which is existing at the panchayat level, can endorse your social audit in terms of passing a resolution and allowing you or your organization to facilitate social audit for that panchayat or for that revenue village. Okay, and the next sixth step is informing stakeholder and sending invitation. You have to also inform the stakeholder. And seventh is evidence collections, data collections. You need to collect data, informations about all those schemes which are being audited, so that and also it is very important to collect testimony of the beneficiaries, which can be presented to the to the government officials or elected representative on the day of public hearing. And the next is public hearing. Once the data collection is being done and everything, testimony is being collected, you have to compile this data, analyze the data, and convert into a report form. And once this is done, then you have to plan for a public hearing. I'm saying public hearing is an important element of social audit process, because it gives an opportunity to the beneficiaries to ask a question directly to the government official and elected representatives, and also it also contributes building a relationship between the duty bearer and duty holders. And it is also very important to look to take care of the power dynamics of that particular village where you are conducting social audit. And you can also invite some of the external stakeholder like media person and to the public hearing, because if the public hearing is getting published in the local newspaper, it creates a demand, create a pressure among the local officials, and as a result they immediately take actions. And the ninth step I am submitting, once the public hearing is being done, you have to submit the report or report in terms of recommendations, okay, to the line department, respected line departments. These are the things to be done for the ICDS. These are the things improvement required for MDM. These are the improvement required for PDS. So this later report has to be submitted to the line department, and you can also share a report also with the media if looking into the context and background of your village. And the last step is follow up and advocacy. It is very once you submit the report, you need to do regular follow up in terms of getting it done for your community. So follow up is very important. Okay, so these are the processes. Okay. हेलो यस जी, मैं महेंद्र कुमार रोशन बिहार से। थोड़ा हम समझना चाह रहे थे कि जो ग्राम पंचायत का रेजुलेशन है, इसमें जो है वो मतलब जो पंचायत के जो मुखिया होता है, जो उसकी गवर्निंग बॉडी होती है, जो ग्राम पंचायत में जो मेंबर चुने जाते हैं, वार्ड मेंबर, वो लोग करते हैं। हम लोग उसको कैसे मतलब उसको रेजुलेशन में ला पाएंगे, उसको थोड़ा समझना चाहते। यस, सो दैट्स व्हाई मैंने बताया कि आपको पहले जाके ग्राम पंचायत का जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, पहले सरपंच से बात करना पड़ेगा। सरपंच से मिलिए,
बात कीजिए, उनको कन्विंस कीजिए व्हाट इज सोशल ऑडिट, हम इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट आपका गांव में करना चाहते हैं, और उनको बोल के कन्विंस करके एक स्पेशल ग्राम सभा ऑर्गेनाइज कीजिए। सरपंच खुद उनको करके रिजोल्यूशन पास कीजिए, उनको मोटिवेट करना। यू हैव टू मोटिवेट एंड एंगेज विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एट पंचायत सो दैट दे पास ए रिजोल्यूशंस। ये बहुत जरूरी है, वो करते हैं। वो एक बार कन्विंस हो जाए तो द एंटायर प्रोसेस विल बी वेरी वेरी इजी। क्योंकि एक्चुअली होता नहीं है, मतलब ये लोग हाँ, वो होता नहीं है, वो दिस इज थोड़ा वही है, कठिनाई है। कठिनाई है। बट आप देखिए, इसलिए सिलेक्शन ऑफ द विलेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द विलेज वेयर वी आर गोइंग टू सोशल ऑडिट इज वेरी वेरी क्रिटिकल। आपको वो सब फैक्टर को देखते ही करना बहुत जरूरी होता है, और ये एक दिन में नहीं होगा। इट इज ए वेरी लॉन्ग प्रोसेस टू बिल्ड ए रिलेशनशिप। पहले तो वो मना कर देंगे, सेकंड फेज में फिर जाके बाद मिलिए, बार बार आपको जाके यू हैव टू बिल्ड ए ग्राउंड फॉर द सोशल ऑडिट, कंडक्टिंग सोशल ऑडिट। ये बहुत आसान नहीं है, बट मुमकिन भी क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है सर। इसी के साथ और भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट कैन वी डू व्हेन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स आर नॉट कोऑपरेटिव? See, as I told in the beginning of my presentations, government does not want people should ask questions. Okay, this is the whole mentality of the executives and the government officials, and that's why we are doing the social audit, to break this mental mindset of the public, the feudal mindset that the bureaucracy is having. So therefore, it is very very important to have a resolutions. वन ऑफ द क्रिटिकल रिजोल्यूशन इज, एक बार वो ग्राम सभा का रिजोल्यूशन में पास कर गया, वो आपका अस्त्र बन गया। ओके, वो कराना सबसे बहुत जरूरी होता है। ओके, क्योंकि ग्राम सभा को इतना पावर दिया गया है, एक बार पास किया गया, उसको सुप्रीम कोर्ट इंडिया भी उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता है। इट इज सो मच ऑफ पावरफुल इन इंडिया, इट इज ए सॉवरेन बॉडी। Thank you, sir. So the resolution should be passed in the Gram Sabha. Yes. This is most important. Yeah. और किसी का सवाल है कुछ? Do you have any questions? जयंता जी, मेरा सवाल है Yes, कि please. जैसे आपने बताया गांव के बारे में तो बता दिया है, 73 अमेंडमेंट के बारे में, कि वहाँ ग्राम सभा में ये उसको सत्ता दी गई है, अगर वो चाहे तो सोशल ऑडिट करवा सकते हैं। लेकिन उसी तरह से 74 अमेंडमेंट में सिटी के लिए, अर्बन के लिए ऐसा प्रावधान है या नहीं है, वो थोड़ा बताएंगे? ये है, ये प्रावधान है। दिस सिमिलर प्रावधान आल्सो अप्लाइज फॉर अर्बन बॉडीज, म्युनिसिपल काउंसिल्स। ओके, तो अगर हम मान लो वार्ड सभा करके आप कर सकते हैं, जैसे हम लोग ग्राम सभा करते हैं गांव में, वार्ड सभा में करके, वार्ड सभा में रेजोल्यूशन पास करके आप कर सकते हैं। दैट इज देयर। ओके, जाकिर जी, क्या क्वेश्चन है? क्या क्वेश्चन? In the urban area. Urban setup में, because I was telling about rural na, so this is also applies in urban setup, in municipal councils. Okay. Yeah, any more questions from the participants? हेलो हेलो हेलो, मैं चंद्रभूषण सिंह, दोस्तनगर सैदपुर से। हाँ सब मैं कहना चाहता हूँ सिस्टर, सबसे पहले तो सभी को गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग एक बार सैदपुर वेस्ट पंचायत में, आप ब्रीफ में रखेंगे ना चंद्रभूषण, क्वेश्चन को ब्रीफ में। हाँ बड़े, हाँ वैसे ही रखेंगे सिस्टर। तो हम लोग पब्लिक मीटिंग करके, हेलो, हाँ यस गो ऑन, पब्लिक मीटिंग करके, और जिसमें कम्युनिटी लीडर्स थे, हम दोनों कम्युनिटी कैंपेन फैसिलिटेटर एंड कैपेसिटी बिल्डर दोनों भी थे, एंड मेंबर थे, और सभी लोग उसमें स्टेक होल्डर के रूप में हम वार्ड मेंबर को बुलाए थे, तो वार्ड मेंबर भी आए थे, ठीक ना। तो सभी लोग थे, और हम लोगों ने इस बात को रखे कि जो आंगनबाड़ी थे महिला, तो उन लोग के बीच में कुछ कुपोषित बच्चे थे, जो उसका वो नामांकन नहीं कर रहे थे कि हमारे पास पूरा हो गया है,
और चूंकि वो दलित बच्चे थे तो हमारा ज्यादा मन सहानुभूति और वर्क था, और किसी भी प्रकार से अगर वो बच्चे को एडमिशन ले ले और वो कहती थी कि नहीं हमारे पास काउंटिंग का नंबर पूरा हो गया है तो मैं इसका एडमिशन नहीं लूंगा, और इस प्रकार से वो माने सही नहीं था। हम लोग सोच रहे थे, ये भी चाह रहे थे कि भाई जो भी आगे आप बहुत दिनों से उसको थोड़ा ये कीजिए और इसका नाम लिख लीजिए, तो वो नहीं बोल रही थी। तो हम लोगों ने वार्ड मेंबर से भी कहा, वार्ड मेंबर भी कहा, वो तो नहीं कर पाया। तो हम लोग जो है ना एक वही पब्लिक मीटिंग करके अपना जैसे मीटिंग करते हैं वैसा उसका फोटो लिए और वहीं पर एप्लीकेशन लिखा। हम नहीं एप्लीकेशन लिखा, लेकिन हमने कहा कि आप बोलेंगे जो कम्युनिटी लीडर से कि हमने एप्लीकेशन लिखा है, और वहां से सब मीटिंग करके और हम लोगों ने कहा कि इस बात को हम लोग सीडीपीओ के पास रखेंगे। तो सीडीपीओ के पास रखें, चूंकि कम्युनिटी लीडर कितना भी बोले लेकिन वो अच्छे ढंग से माने सीडीपीओ के सामने नहीं रख पाए। तो उसी बात को फिर मैं सेकंड टाइम में इन सेकंड बार उसी के सामने उसको मैं बहुत बढ़िया से रखे कि ऐसी ऐसी बातें हैं सर, और भी कुछ जो सम प्रॉब्लम्स थे, जो आंगनबाड़ी नहीं देती थी, जो पोषाहार था या उसको कम वजन करके देती थी, या कभी कभी किसी प्रकार से वो मिसिंग करती थी, तो हम लोग उस बात को भी रखे और उस बात को एप्लीकेशन में भी डाले। तो हमारी बात को तो सीडीपीओ सुना, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बढ़िया से सुना। वेरी गुड, और वेरी उस गुड। बात हाँ बढ़िया से सुना, और उसका पॉजिटिव परिणाम रहा कि उसका जो 2-3 बच्चे थे कम्युनिटी के, उसको एडमिशन ले लिया आंगनबाड़ी। लेकिन निगेटिव परिणाम ये रहा सर कि हम लोगों को अब मैंने वो दूसरे साइड में भी और वहां भी फोटो लेने के लिए मना कर दिया कि वो आंगनबाड़ी को बोल दिया ऑफिसर कि किसी भी, जैसे हमको पूछा कि आप कौन है, तो हम बोले कि हम इंडिया में काम करते हैं, एनजीओ से हैं और हम कैंपेन फैसिलिटेटर हैं। तो वो एकदम वेरी सख्त हो गुड, जाए वेरी गुड। कि आप जो है मैंने आंगनबाड़ी सेविका को सहायिका को कि आप किसी को फोटो नहीं लेने देंगे। अब हम लोगों को वहां पर फोटो नहीं लेने देती है ना कि आप परमिशन लेंगे ये पहले मैंने पदाधिकारी से, तब आपको हम फोटो लेने देंगे, नहीं तो नहीं लेने। हमारे साथ हम लोग के साथ निगेटिव परिणाम ही आया, पॉजिटिव परिणाम आया कि उसका एडमिशन हो गया। चंद्रभूषण जी प्लीज Very यू good. आज द क्वेश्चन। आप तो जो क्या प्रोसेस बताया हाँ। ऐसा क्या क्या किया, यू जी डिड जी दैट जी वेरी गुड थिंग। ओके। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है, सवाल क्या है? क्वेश्चन हमारा कहना यही है सर कि हम स्टेक होल्डर ये उतना इम्पावर नहीं रहता है, एंड ट्रेंड नहीं रहता है, एंड एजुकेटेड नहीं रहता है, और स्टेक होल्डर मतलब ओनली फॉर जनप्रतिनिधि, क्योंकि हम लोगों ने उसी को आगे करना चाहा तो वो नहीं हो पाया। तो हम लोग इस कंडीशन में, क्योंकि हम लोग के पास एविडेंस होना चाहिए, डाटा होना चाहिए, तो डाटा तो हम लोग पब्लिक से ले लेंगे या कम्युनिटी लीडर से ले लेंगे। ओके इसी सो तरह कुछ से जो अन्य संस्था है जैसे पीडीएस दुकान है या अनदर दुकान है, तो उसके बीच में हम लोग कैसे कार्य करेंगे, जब वो कि हम तो पहले से था कि भाई हम एक सहयोग कर्मी के रूप में आपको सहयोग करेंगे, आपको जो बातें होंगी वो बताएंगे। तो हम लोग को ऐसे जो सरकारी संस्थाएं होती हैं उससे हम लोग को सहयोग नहीं मिल पाता है, ये मेरा कहना है। ओके सो आई थिंक फादर मैथ्यू Thank you. Yeah, Father Matthew, please, you ask the question. You had raised your hand. Chandrabhushan ji, just hold on your questions. Yeah. मतलब सर हमारा क्वेश्चन ये है कि जो हमारे सामने बातें आई उसके माध्यम से सरकारी जो संस्था है उसके जो स्टाफ हैं वो हमें एकदम इग्नोर करके चलता है, हमको कोई भी बात नहीं बताता है और कोई भी कार्य नहीं करने देता है उस जगहों पर। पब्लिक के जैसे हमारे ये तो कम्युनिटी लीडर्स का काम है, लेकिन हम लोग उस परिप्रेक्ष्य में अपने को वहाँ कैसे सपोर्ट एंड सहयोग स्थापित कर सकते Yeah. जबकि हमें उस तरह से वहाँ कोई सहयोग एंड सहानुभूति नहीं मिलती है। आप पब्लिक को अवेयर कर सकते हैं, राइट बेस्ड उसकी बातों को बता सकते हैं, ये तो हमारा काम है और कर भी रहे। लेकिन कुछ सरकारी संस्थाएं माने ऑफिसर सहयोग करे तो हम लोग ज्यादा बेहतर, उसमें कुछ ऐसा आइडियाज एंड उसके लिए कुछ ये नहीं है, इट इज वो तो सरकारी ऑफिसर को डील करना थोड़ा मुश्किल होता है, बट माय सजेशन वुड बी एंगेज till you are not able to change their mind. Work with them. Yes. Okay. Okay, Father Matthew had a question. Yeah, please. Father is not here.
Yeah, it is. He is there. So, Father, just unmute yourself. Father Matthew, please unmute. Sorry. You see, the panchayat works based on the political parties, though it is in principle, it is not supposed to. Therefore, to get the members to get a resolution passed is a Herculean task. And therefore, for people to get a resolution for social audit, particularly, where they will be critically looked into and even judged, will not be easy. So how do you feel about that one? The situation in our country and panchayats. See, Father Matthew, thank you for your questions. It's very true, but it's not applies to all the panchayats. There are even if without passing a resolutions, you can do the social audit. The resolution is required actually. What I required in certain areas actually where to manage the uncooperative or the officials who are not supporting the social audit process. So there you can go for the resolution, even if even if the panchayat officials or the panchayat elected representative and the peoples are voluntarily coming together and doing this process, it is also welcoming. You can go by both the processes. Okay, but resolution, why I'm recommending it, will give a legal mandate to the entire process actually. Okay, good. Thank you. Authenticity हो जाता है वो process में. Hello, Tony from Jharkhand. Yes, Father. Yes. Actually, the villages, now I see a post by Jayanta that, community campaign, community facilitator and community capacity builder can do this, because it's not easy. In Jharkhand and all, people are not available, so you have to train them first and prepare them to them that they will be able to do. A lot of work is there. It's exactly, very true. Yeah. And also, even if Gram Sabha passes a resolution, the Sarkari Babus will not easily be available. True. Yes. True, very true. Yeah. So actually, there are you're correct, as you said. It is very, very important to understand. Actually, so I have written a 55 pages manuals where I have explained all the processes actually, in very minutely in terms of how each of the step has to be followed. Looking into all the socio-economic dynamics of different states actually. And as you said, it is very, very important to train our grassroots worker all those tools, techniques in terms of how the process has to be conducted. Then it would be possible actually. But still, we want to do social audit. Otherwise, there won't be any change. Yeah, you can do it. It's not easy, but one has to do it. Yeah. That's what I'm saying. With proper trainings, orientations, you can do it. I would like to, supporting Tony's idea. I think it's very crucial, like I just said in the beginning, to know and understanding the context, the power dynamics, the composition of socio-cultural communities, the composition of rather relationship with the different line departments, and how it's affecting the beneficiaries and the common concerns, and therefore understanding the whole context, my own people is very important. And exactly. Very true. The empowerment, rather the awareness building begins.
This is, I believe, this is a democratic process. Therefore, it is a constitutional right process. We are not entering into a sort of conflicting situation. Exactly. A dialogue with the government structures and procedures, which is a constitutional and democratic. Yes. Democratic awareness building in the context, for example, you were saying, sir, 11 fifth scheduled states, for example, like there are rules and regulations also. Some states have rules and regulations, other states don't have, they are still in the process. So all these structures, dynamics, processes is very important. And of course, awareness building is an attitudinal change at the same time also. What can be done. So having an inclusive approach, taking up non-confronting issues and concerns which are inclusive, which are common to all, where people would be with us. So the whole question is awareness building, understanding Gram Sabha, its powers and education perspective with knowledge and skill. These are very crucial. I think it's not the, let us say, throwing away the government. It is the participation in the democratic process. True. Very true. Correct. Well said. Okay. Is there any questions? और किसी का सवाल है? At the moment, there are from me. There is no more questions, but at the same time, I would like to know. Hello. Okay, please go ahead. Yeah. I was saying something. Can I go ahead or? Please. Yeah, go ahead. So I was saying that, the process step by step, much more need to be, if we can share the PPT and the process much more, because most of this presentation today is. आशा किरण मसूरी से बोल रहे हैं सर. आशा किरण से. Just hold on, please. Asa Kiran, just hold on. Today's presentation was more of a theoretical, but more practical things. If we can give, it will be useful for our people. Yeah, that's all. Sure. Hello. Yeah, Asa Kiran, go ahead now. जी हाँ, अभी मीटिंग में मेरा सवाल है कि सोशल ऑडिट जो जैसे हम लोग नगर परिषद में आते हैं, मसूरी नगर परिषद में, और मैं वार्ड प्रतिनिधि भी हूँ. इस बार मैं वार्ड प्रतिनिधि भी बना हूँ. तो मैं सोच रहा हूँ कि सोशल ऑडिट में अपने वार्ड में कैसे करूँ, कैसे लागू करूँ. ये आशा किरण कहाँ का? झारखंड का है? मसूरी, बिहार मसूरी पटना. हाँ, ओके. झारखंड है तो हम मदद करते. नहीं, बिहार पटना. So Asa Kiran ji, I think you are from Sister Sony, right? Okay. नहीं, आशा सिस्टर, कोलेक्शन सिस्टर. Okay, scholastic sister. Okay. So जैसा कि हम लोग का अभी बात हुआ कैसे ये प्रोसेस को कैसे फॉलो करना है, शायद वो हम लोग हमारा एसएलटी का साथ, अजित जी का साथ हम लोग एक प्लान कर सकते हैं. आपका तो अभी एक प्रकार पावर भी है, वही पावर को यूज करके आपका वार्ड में आप कर सकते हैं. ठीक है. इसका जो प्रोसेस है हम लोग आपको बताएंगे फिर. ठीक है. अजित जी के साथ आप कनेक्शन में रहिए और हमारा साथ भी बात कीजिए, हम लोग करेंगे. ओके. और कोई है? और किसी का सवाल? एसएलटीज सुरेश जी, अमरोज. Yes, sir, I am following, and okay, it is good, informative, and it is a practical also. Okay, so there is no question, right? Yeah, there is no question because it is very much a process have to be done. Okay. Because he is saying that Amroj, lot of Amroj, do you have any question, Amroj? Yeah, please. Jayanta ji. Yes. So I couldn't be able to follow much in the middle. Okay. So the end only I could understand something. Okay. So anyway, I will ask question once I go through the material and all. Okay. Anyway, I came to understand some concepts clarity as we learn from this session.
Contribute clarity, we learn from Rajan. Father Stanley is very much interacted with the clarity things and all. So today we highlighted such a good strategies, what concept clarities. Yeah, everything is good today. Okay, Shamlal ji, Ulas ji. If nahi, to then we'll stop it. Now it's already 1 hour 45 minutes. Okay. Okay. Anyway, thank you so much. If you have any questions also, just you can reach us so that we can also clarify you in a certain bit. Okay. Thank you so much. और किसी का सवाल है तो आप लोग हम लोग को पूछ सकते हैं और एसएलटी को पूछ सकते हैं तो हम लोग क्लैरिफाई आप लोगों को करेंगे. ठीक है. Yeah. So Sukant bhai, anything just would you like to say? Otherwise, I will request Father Stani for the concluding remark and also how to go forward and all. Nothing at this point. So thank you so much, all my friends from Long Bunch, including Father Stani, Ruby, Sister Ruby, Prajanti. So we'll keep interacting. We are not going to leave you now. Now people will come to you. Yes, yes. Okay. So, dear Sukanta ji, kindly share the PPT resource materials, na? So we can share. I'll say, yeah. Okay, so over to Father Stani for how to go forward after that. Okay, thank you, Jayanta. Thank you, Sukanta, sir. It was really good, and I'm looking forward for further collaboration, physical. Yeah, in the we'll meet soon. I mean, person to person, that would make more practical, maybe. Exactly. Either region-wise or state-wise. So thank you very much. Thank you. Would accompany my SLTs, my national team, and other even the state coordinators also. So dear friends, thank you very much for participating. साथियों, आप सभी को बहुत धन्यवाद. हो सकता है कि बीच में ज़्यादा हिंदी हुआ, अंग्रेजी ज़्यादा हुई. That's okay, but I think the main purpose, I think we have understood what is the social audit, what are the procedures, what are the guiding principles, what are the strategies, steps to be followed. That the practical, I think, though theoretical, but I think they are. Yeah. So as I said, it's a democratic process. It is the people's participation. It is democratic in a way. I would say, Sir Sukanta, it is a direct democratic participation in the implementation of government schemes. So we are assisting the government in completing the work of which the government should do through the more people's participation. Therefore, Gram Sabha empowerment is very crucial. So that has to be there. Educative process has to be there. So that we need to take care. And it's a dialogical process also. Dialogical process with the line department, dialogical process with the beneficiaries and stakeholders, all those who are participating in view of greater transparency. The more the transparency, the more the power. In terms of mutual sharing, mutuality is there. So that is there. And when we talk of Jan Sunwai, like Sukanta sir, you were saying, sometimes it leads to conflict. Yeah. So that's the prudence and vigilance we need to have. Therefore, I'm using the word dialogue. करना है अलग-अलग विभागों के साथ, हमारे जनप्रतिनिधियों के साथ, लगातार उनके साथ उठना बैठना है, बात करना है. It is a mutual educative process. Because many, बहुत सारे ऐसे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको भी कई बार पता नहीं है. Like when I was working for Gram Sabha, this thing, even SDM was asking हमको कहाँ sign करना है. I think though he must have been aware about it, but that's there. So therefore, we need to be prudent, vigilant, but consistent. And also, I would suggest in many places when I'm visiting, I'm suggesting our people to begin Women Gram Sabha also, Women Ward Sabha, and identify the common inclusive needs of the people, which, for example, water, for example, health, sanitation, Anganwadi, education, all these, which are inclusive and which everybody needs. So I would suggest that we start from there, which is doable, practical, at the same time, ongoing process. We need to be a pressure group, that I understand, but that's so quite vigilant. And also it is
Very important, sir, if you could also share some of the formats you said, that format Sure, has sure. with the strategic process and approach, and follow-up team, as well as the social audit team, which has to be with really skilled knowledge and critical analysis with the database. So I think we would be in a better position in this one, because it is the whole of our democratic process. So thank you, everyone. Thank you, Sukanta sir. Thank you. Thank you. Thank you, all SLTs. Thank you. Thank you. Is there Guru sir is there or he has left? Guru, I think he has slept. Oh, he has left. Okay. And So Bharat. yeah. Bharat. Bharat sir. Bharat, are you there? Bharat sir, are you there? Bharat, I think he has also left. Okay. So he must be some program and all. Yeah, the meeting. Anyway, so friends, just two things before going for the proposed vote of thanks. Just two things. Just I would like to say that the Lokman stands, particularly how to ensure the social protection schemes and entitlements, all those kind of things. So this is one of the major activity that we can say for Lokman, that which we have been already doing since 2015. On the other hand, when we are making accountable to the local administration, the social protection schemes has to be very, very familiar and aware about it. So unless we bring together, I mean, the social protection scheme, it is a daymare for all of us. We cannot achieve what we are thinking right now. So completely, and also it is very, I mean, the very, very special way. Just we have to bring this social audit kind of thing, or entitlement access audit, whatever you say, in our work, so that we can ensure the social protection schemes. So before going to these things, just I will request all of you to get ready for this social entitlement access audit, at least in 5 villages of each of organization. So at least we will go for 5 organizations. Of course, Father PM Tony and others, they asked what kind of budget we have and all those kind of things we can speak on later on. So we'll send you the format immediately, so that we will go for this thing. And also request to Sukant Bhai especially and Educo, how we'll go with this kind of skill and knowledge, so that at least we will come out with some kind of report or some kind of advocacy tools that we can say from village to national level. So thank you so much, and I request our colleague Tanpreet for the vote of thanks. Tanpreet. Good afternoon, everyone. It was such a pleasure to have organized this workshop on the topic social audit of social protection scheme concept, steps, and strategy. I would like to thank Mr. Bharat Nayak and Mr. Guru Prasad for enlightening us with their views and some encouraging words. Special thanks to our thematic expert, Mr. Sukant Chandra, for sharing his knowledge and expertise with us. It was really a pleasure, sir. I would now like to thank Father Stani for his welcome remarks and for starting this session with such great positive energy. Thank you, sir. Warm regards to Jayanta sir and Sister Ruby for their support and management throughout. Also, last but not the least, thank you to all the participants for taking out time and being a part of this informative session. Thank you very much. We thank Ferdinand and Tanvi from CDO office. They were supporting us with the technical things, the YouTube link and then other things. So we received a great support from them. So thanks to the team, CDO team. Okay. Thank you. Thank you all. Thank you. Thank you so much. Thank you. Okay, bye-bye. Thank you. Thank you, Sister Ruby, Jayanta sir. Thank you, Jakir Bhai. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Mahinder ji. Thank you, sir. Thank Thank you. अच्छा आप लोग यहाँ Thank you, sir. धन्यवाद सर जी.